Hello everyone, good morning to all. I just request all our participants on the YouTube confirm me once that sir my voice is audible so that we can start our discussion on a very special mission, I can say. Sir, I'm waiting for your response on the YouTube chat box that my voice is audible, because today we all are here to discuss on a very important, a very special topic at all. Bank branch audit. Okay, we have 1 hour and we'll try to cover the special, practical, insightful content for the bank branch audit in our today's session. Okay, so sir, throughout the session I require your help, because if you will put the comments in the chat box, then this session will be interactive and interesting. Okay, so what I require, whenever there will be a question in your mind related to the topic, you can put it in the chat box. I am here to provide you the response live. Okay, after the session, or if you are watching the recorded videos, then also if you have any query, you can put it in the chat box. I am here to provide the response. That is what is the scenario. The second thing, sir, the mode of communication of this session will be Hindi and English both. We'll try to cover the maximum content in English language, but if you have any query, any concern related to the language, you can put it in the chat box. We'll convert according to your comfort zone. Okay, I also require one thing from all of you, that sir, just keep one notebook or one pen with you. Okay, because if you found some important special point throughout the particular session, in that case you can make the notes of the same. So sir, just let me know once in the chat box, live chat on the YouTube, are you ready for our discussion on the bank branch audit 2026? Because this is a very important, a very special session. Okay, and I am not going to discuss any theoretical portion in this specific session. This particular session is completely related to the practical approach of the bank branch audit. Okay, now sir, why this particular topic is very crucial and very important for us? The reason being, this is one time task in a year, and this is a special task for the chartered accountants. Okay, many of us are already doing the bank branch audit, many of us are expecting the bank branch audit, and while performing the bank branch audit, we have a limited amount of time, 10 to 12 days, and we have to do our best. Okay, the reason being, the RBI is continuously reducing the scope of the statutory bank branch audit, and now if we have not taken the decision to provide the quality reports, in that case there may be issue in future. Okay, so we should be ready from that perspective. Hence, at the initial phase of this particular session, when I have started my deliberation, I have used a word that today we are going to discuss on a specific mission, because this bank branch audit we should take as a mission only. 10 days, 2 branches, a lot of things we have to check and provide our comprehensive report and identify the irregularities which will be there in the bank, and we have to report it down. Okay, now this is our responsibility. When we are supposed to submit our report, there should be quality observations, not merely no, not applicable. There should be some quality observations. There should be some changes which has been suggested by the chartered accountant in the financial statement through the MOC. There is requirement to identify the internal control weaknesses. There is a responsibility to identify the procedural issues and the operational part as well. All these things are or our responsibility. And if we'll cover all these things, then yes, definitely our report will be in a perfect form and there will be a quality reporting. Now, there may be one question that, sir, we have a limited amount of time. How we can go through with all these things in a very limited amount of time? So, sir, yes, time is limited. But if we'll use certain techniques, if we'll go with the efficiency and efficient techniques, in that case, definitely we can cover all the area in the bank branch audit in the given time in a very efficient way. And in this particular session, I am going to discuss the practical things which we need to follow, which we should follow. Okay, so sir, are you ready for the discussion? Can I go with my first slide of this statutory bank branch audit? Sir, whenever there will be a less time and excess work, at that time the most important role will be of your planning. If there will be an issue with your planning, in that case your process will not be there.
or your process will not be in a such a way that is a required manner. So our planning plays a very important role, and I will give 10 to 15 minutes to the planning portion. Sir, in case of bank branch audit, it is not an individual task. It is a task of a team. Okay, still we have 8 to 9 days to start that bank branch audit. So I request each one of you, if you are watching this particular video as a chartered accountant, as a team leader, share this video with your article assistant, with your team who is going for the bank branch audit. Try to give them this the summary notes of the ICAI guidance note, because at the end this is a teamwork, this is not an individual work. When we have 5 to 6 people, we have to utilize each and everyone, we have to distribute the work. That also I am going to share with you, okay? Because in this session I am not going to share with you how to identify the NPA, how to calculate out of order. These things I am not going to discuss. I am going to discuss certain practical scenarios which we need to follow, okay? So this session is going to be completely a different session for all of us. So the first part, the first pillar for this bank branch audit, I can say successful bank branch audit, is your teamwork. And for that purpose, you have to train your team. You have to assign the work to your team. That is what is the first responsibility, which is there with the team leader. Okay. Now, sir, when you are using the term planning, okay, so what do you mean by the term planning? Sir, 10 days, 2 branches. So first of all, I know audit has not been allotted yet. Branches has not been allotted yet. You have no idea about the working nature of that particular branch or the segment of that particular branch. But the point is that your audit program should be ready. Sir, what do you mean by this audit program? Just, I am not going to show the slide. Without slide, I just wish to discuss with all of you. Sir, what do you mean by the audit program? Prima facie, if we'll check, then in this particular bank branch audit, we have total 4 important segments, 4 important pillars. One is we have to check the physical files. Okay, we have to check the physical files, the advances files, the saving bank account, the current bank account, and other files which has been maintained by the bank. That is the first focus. Second focus area, that is your finacle or the core banking system, which whatever will be there in the particular bank. We have to check the data which is there in the core banking system. Third, we have to check the internal control and procedural part and operational part. And fourth is your final reporting. So, sir, these are the 4 segments with all of us for this bank branch audit. So we have to distribute our staff, we have to distribute our team for these 4 work. Suppose you have a 5 staff team or 5 team members. In that case, one person should be your team leader. Okay, that person will take care of all the supervision and the concluding remarks and the preparation of LFAR. But the LFAR preparation and conclusion is not completed without the work of all other 4 people. Okay, so 2 people you have assigned to the physical files, 1 people you have assigned to the core banking system, who is going to check the data which is there in Finacle or other core banking system based on the suggestions which has been shared by your other team members by verifying the particular physical files, and 1 team member will look on the internal control, look on the procedural part, look on the operational part regarding the inventory valuation on account of the staff which is there with the bank. Okay. These things we have to identify. This type of distribution of work is required so that our working will be in an efficient way. And sir, we all know that in this bank branch audit, the working paper plays a very important role. Okay. And कुछ बातें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी बोलूंगा. कई बार होता क्या है, हमारे पास टीम मेंबर होते हैं 5 से 6, उसमें से 4 ऐसे आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं जो नए आए हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट द बैंक ब्रांच ऑडिट. 2 पीपल होते हैं जिनको आइडिया है. So what you need to do, first we have 5 to 7 days, we have to train our 4 new articles about the bank branch audit. What the things we have to do in this bank audit, that we have to train. Okay, that is our first responsibility. Second responsibility, मैं कुछ है ना आप लोगों के साथ ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूं. सो इफ पॉसिबल ट्राई टू नोट इट डाउन. और एक प्रॉमिस मैं आपसे करके जाता हूं, इस बैंक ब्रांच ऑडिट में आप उन टेक्निक्स को फॉलो करना. योर बैंक ऑडिट विल बी वेरी एफिशिएंट वे. क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर योर टीम. कई बार होता क्या है, वो 4 जो नए आर्टिकल है मेरे, उनको अगर कोई डाउट आता है तो वो बार बार टेबल से टेबल घूमते हैं, वो पूछ रहे हैं इसका क्या करूं भैया, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है. एंड इट विल क्रिएट द इश्यू ऑन आवर इमेज.
वो बैंक मैनेजर और बैंक का स्टाफ सोचता है इनको कोई आइडिया नहीं है, दे आर जस्ट हियर और हमको इनको एंटरटेन करना है फॉर नेक्स्ट 5 days जस्ट टू टेक द क्लीन रिपोर्ट without MOC or without any observations. Okay, that is what is the purpose of that particular bank branch manager as well. Because हमारी ट्रेनिंग तो होती नहीं है और बैंक उन बैंक मैनेजर्स को ट्रेनिंग देता है हाउ टू हैंडल द बैंक ऑडिट. So as this is also our responsibility to go for the training, so create an internal WhatsApp group. आपके स्टाफ को ये सजेस्ट करें कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, टेक अ पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी और राइट इट डाउन इन द WhatsApp group. Team leader or a specific person who is going to provide the response of the queries on the WhatsApp group itself. और हो सकता है इवनिंग में जब आप लोग बैंक ऑडिट का काम कंप्लीट करके आ जाओ अपने रूम में, होटल में बैठ करके उन स्पेसिफिक मुद्दों पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. सो दैट इट विल क्रिएट अ इमेज. उस बैंक के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि हाँ इन लोगों के पास वो नॉलेज है. कई बार कई सारे ऐसे बेतुके क्वेश्चंस हमारे स्टाफ बैंक स्टाफ से पूछ लेता है जिनकी कोई रिलेवेंस नहीं होती है. So first we have to suggest our staff कि आपको कोई भी query हो, first ask with us in the group. If we'll give you the green light, you can go with the bank and ask. वरना बैंक ऑफिसर को लगता है क्या ये लोग तो आ गए यहाँ पे मजे करने के लिए, and now this is not our objective. I hope you all are with me, sir. Just once in the WhatsApp, once in the chat box on the YouTube channel, confirm me. Are you with me, na sir? I am right. So first thing what we need to create a WhatsApp group in which the queries will be there. The second thing, कई बार हम लोग क्या करते हैं वर्किंग पेपर के लिए सेपरेट डायरीज मेंटेन करते हैं. दिस टाइम फॉलो वन एक्सरसाइज. क्रिएट अ मास्टर एक्सेल. टीम मेंबर ए, टीम मेंबर बी, टीम मेंबर सी, different tabs in that particular Excel sheet or Excel sheets in that particular Excel, so that each every member can put the remarks or working paper of the observation with the account number in the Excel sheet itself. और लिंक वो सबके पास होना चाहिए ताकि इवनिंग में हम ये देख पाए कि उस शीट में क्या अपडेट हुआ है. और सारे के सारे वर्किंग पेपर डिजिटली हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म पे होंगे ताकि whenever we'll go for the LFAR preparation we can consider each and every observation. वरना होता क्या है वो डायरी में हम लोग लिखते जाते हैं और फिर उन 4-5 डायरियों के मर्ज करने में हमको जोर आता है बिकॉज एट द एंड वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. सो दैट वी नीड टू एंश्योर. ओके, सो प्लानिंग पार्ट में ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए. ऑडिट, योर व्हाट्सएप ग्रुप शुड बी रेडी, योर एक्सेल शीट फॉर द वर्किंग पेपर शुड बी रेडी, ऑल्सो योर टीम शुड बी रेडी विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. जो बंदा फिनेकल देख रहा है उसको फिनेकल का या कोर बैंकिंग सिस्टम का पूरा आइडिया होना चाहिए, सारे के सारे कमांड्स उसको पता होना चाहिए. हमको पता है हम कुछ रिपोर्ट्स MIS सर्वर से भी ले सकते हैं, बट उस ऑडिट के दौरान MIS सर्वर बहुत स्लो चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं क्योंकि उनकी एनुअल क्लोजिंग चल रही होगी. सो वी आल्सो नीड टू टेक केयर कि जैसे ही एनुअल सर्वर चले, MIS सर्वर चले, वी हैव टू टेक सर्टेन रिपोर्ट्स फ्रॉम दैट सर्वर. इफ यू विश आई मे शेयर द लिस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड. ओके, वी हैव टू जनरेट. सो फर्स्ट थिंग, आपकी ऑडिट स्टार्ट होने से पहले आज ही अपने ऑफिस में बैठ करके टीम मेंबर डिसाइड कर ले ये हमारे टीम के मेंबर्स होंगे, ये इस काम को करेंगे. मिस्टर ए फाइल्स को देखने वाला है, मिस्टर बी फिनेकल या फिर कोर बैंकिंग सिस्टम को देखने वाला है, मिस्टर सी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजरल पार्ट को देखने वाला है, मिस्टर डी पूरा सुपरविजन करने वाला है और मिस्टर ई जो है फाइनल रिपोर्टिंग, LFAR प्रिपरेशन और बैंक स्टाफ से डील करने वाला है. इस टाइप का हमें एक शेड्यूल और ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है. सेकेंड थिंग, कई बार हम लोग भूल जाते हैं टू टेक द NOC फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर. होता क्या है जल्दबाजी में हमें वो काम करना होता है एंड वी फॉरगॉट टू टेक द NOCs. एंड नाउ वी ऑल नो दैट द पीयर रिव्यू इज एप्लीकेबल. And in case of peer review, when the reviewer will come to your office and if the person has asked for the no objection certificate and if we have no objection certificate, it will create some issues. So we should be very much careful from that perspective कि भैया हमारे पास में NOC लेटर होना चाहिए. कई बार पुराना CA आपको नहीं भेज रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप उसको जस्ट एक रिमाइंडर मेल डाल दें कि if you will not share the NOC within 2 days, in that case it is deemed NOC. ये हमको करना चाहिए. ऑडिट टीम के साथ आप अपनी मीटिंग शेड्यूल करें और उस मीटिंग के अंदर आप जो वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इमीडिएटली असाइन कर दें ताकि उस बंदे को भी पता रहेगा कि मुझे कौन सा काम करना है. एक ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी, जैसे हमको 5 days मिले फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांच, तो हमारे पास में होना चाहिए 2 days में हम ये करेंगे, 3rd days में हम ये करेंगे, 4th days और 5th days को हम लोग फाइनल रिपोर्टिंग करके फ्री हो जाएंगे. दैट इज द कंप्लीट ऑडिट प्रोग्राम शुड बी देयर विद ईच टीम मेंबर.
और उस टीम मेंबर को यह भी पता रहे कि ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, ताकि कम्युनिकेशन एकदम प्रॉपर हो पाएगा. If there will be any issue on account of the communication, in that case also it will create some issues. सर ICAI हर साल गाइडेंस नोट इश्यू करती है. हम अपने आप से पूछे कितने लोग उस ICAI गाइडेंस नोट को फॉलो करते हैं, या उसको एक बार रीड आउट करते हैं, या उसकी समरी हम लोग देख लेते हैं. आपको चाहिए आप मुझे बोलना, आई विल शेयर अ क्विक समरी ऑफ द ICAI गाइडेंस नोट इन 4 to 5 minutes. बट द पॉइंट इज दैट अब अगर हम सोच रहे हैं कि हम वो ट्रेडिशनल वे में ऑडिट जाकर के कर लेंगे, दिस विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इस सेशन में मैं कोई प्रोविजन की बात नहीं करने वाला हूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात नहीं करने वाला हूं. इस सेशन में मैं ये बात करने वाला हूं कि हमको बैंक ऑडिट करनी कैसे चाहिए. एंड दैट इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. We have idea that when accounts should be classified as NPA. We have idea that what are the internal control, what are the irregularities, but how we need to identify, that is the biggest question. I know everything, but I have no idea that how to identify the things. In that case, what will be the use of that knowledge? So today we'll try to give you the idea how you can utilize the same. कुछ लोग बोलते हैं सर 5 days are very less for the bank branch audit. Now sir, after COVID हम सबने एक्सेल सीखा है फॉर डूइंग द बैंक ब्रांच ऑडिट इन द कोविड सिनेरियोज. क्या हुआ था, एक सिंपल ब्रांच में बैठ करके हम लोगों ने रिमोट लोकेशन से ऑडिट की थी और वो ऑडिट भी हुई थी. सो नाउ व्हेन वी हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज, अब आप सोच रहे हो आई एम 60 70 80 years old and I wish to go for bank branch audit. If you are ready to update yourself, then you should go. Otherwise you have young team members, suggest them to learn the Excel. सर 4-5 रिपोर्ट आपने फिनेकल कोर बैंकिंग सिस्टम से ले ली, उनके रिपोर्ट सर्वर से ले ली, या उनका डेटा ले लिया, सारे के सारे एडवांसेस का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, उनकी एनपीए डेट का, SMA 0 1 2 ले लिया और फिल्टर्स लगा लिए और क्रिएट कर दी एक मास्टर एक्सेल, तो आप सैंपल बहुत इजीली सेलेक्ट कर पाओगे. और अगर आपकी सैंपलिंग परफेक्ट हुई तो रिजल्ट विल बी वेरी 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 गुड. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन. क्योंकि 100% डेटा आप चेक नहीं कर सकते हो, बट 100% पॉपुलेशन में से आप डेटा ले सकते हो. और अगर आपकी सैंपलिंग परफेक्ट है तो your final audit conclusion will be very perfect. And now the sampling is completely based on the Excel report which has been generated. अब वो टाइम चला गया, मैनुअल आप लोग रिपोर्ट लोगे, मैनुअल आप लोग अकाउंट टिक करोगे और फिर उसकी फिजिकल फाइल्स देखोगे. जब बैंक ने उसके सारे के सारे एडवांसेस आपको दे दिए एक्सेल के अंदर, सो व्हाट यू नीड टू डू, just highlight the account which you have to check physically, just highlight the account which you have to check in system based on the outstanding balance, based on the movement of NPA, based on the movement of SMA 0 1 2, based on the window tracing oriented transactions which will be there in the bank audit. That we need to focus. So now we also need to adopt the technology, because without technology now it will be next to impossible to conduct the bank branch audit. This is again a very important point which we need to keep in our mind. जैसे ही आपको ब्रांच अलॉट हो जाती है, okay, suppose on 30th you will get the branch allotment, so try to provide a requirement letter to the branch manager by 31st or by 1st of April or by 2nd of April that sir these are our requirement, please provide it over mail. अब वो आपको मेल पे प्रोवाइड नहीं करवाएगा, दिस इज ऑल्सो assured. वो बोलेगा सर आप आ जाए वहीं पर ही मैं आपको मेल कर दूंगा, वहीं पर ही हो जाएगा सब कुछ, ये वो सारी सारी चीजें होने वाली है. दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके. बट हमारी तरफ से एक रिक्वायरमेंट लेटर जाना चाहिए, बिकॉज आपको पता है as a chartered accountant when we are going for the audit we should have all the documentation as a proof, so it will also create a very much effect. If you require the format of the requirement letter, just ping me, will share with you the engagement letter and the management representation letter. This is also a very important thing. कई बार हम लोग क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है कि वी शुड चेक दी जस्ट वेट फॉर अ सिंगल सेकेंड. कई बार हम लोग MRL को लेना भूल जाते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर को लेना भूल जाते हैं, क्योंकि ऑडिट हो जाती है, हम सोचते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. सर नाउ यू कैन रेडी योर MRL लेटर एंड एंगेजमेंट लेटर इन वर्ड फॉर्मेट.
जैसे ही आपके पास में ब्रांच आए, जस्ट मेक द नेसेसरी चेंजेस एंड सेंड इट. यस, आई नो दिस इज अ फॉर्मेलिटी, बट एज अ वर्किंग पेपर दिस शुड बी विद अस. बिकॉज बैंक तो उन पेपर्स के बेसिस पे उनको आगे यूज ले लेगा, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग कई बार डॉक्यूमेंट नहीं ले पाते हैं. इट विल क्रिएट सम इश्यूज. और कई बार होता क्या, बैंक स्टाफ बोलता है सर बाद में ले लेना, फर्स्ट वी विश टू सबमिट द रिपोर्ट एंड फाइनलाइज द थिंग्स. और बाद का वो दिन कभी आता ही नहीं है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वेरी स्मॉल पॉइंट. और कई बार हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते, एंड दीज थिंग्स विल क्रिएट सम इश्यूज. I hope now my voice is audible.
Okay, actually there were certain mic related issues. Now I think my voice is audible. Okay, so the last point was that we have to use the technology in our audit. Without technology we should not conduct this particular audit. Okay, understand the banking system. When you have allotted the branch, your first question should be with your branch manager is not that what is the quantum of your advances. ऐसा नहीं पूछना है. We should ask what is the nature of your advances, whether it is agricultural advances, whether it is a retail banking, whether it is a business oriented branch. अगर आपको एक बार ब्रांच की बैंकिंग के बारे में समझ आ गया, so you can easily go for the audit in a very efficient way. That is again a very required thing that we need to focus. Then again, yes, we can ask for the advances, the quantum and all that, but we should ask about the normal banking as well, so that we can train our team accordingly. So this is the point from the planning perspective. Okay, sir, planning portion is okay for you or not? Just let me know once your planning portion is okay for you or not, because planning plays a very important role for all of us. So we should be very much careful from the planning perspective. Actually, there are certain. Now, sir, next question. A big question which will be there in front of us. That is, NPA identification is automated or not? Because whenever you will visit the bank manager or bank staff will say that, sir, NPA marking is automated. System is going to mark the NPA. There is no question on the NPA. Or central office, circle office, regional office, everyone is there to take care of the NPA. Yes, definitely everyone is here to take care of the NPA. I have no question in that. But suppose if the data which is there in the core banking system is wrong, in that case your NPA calculation will also be wrong. So our purpose, अब सर आपको मेरी PowerPoint presentation में कोई content नहीं मिलेगा. On each and every slide there is a question, and I am going to discuss on that particular question. Okay, so I request each one of you, please be with me, because in 30 to 40 to 50 minutes we'll cover everything related to the bank branch audit from the practical perspective. Okay, so I will take your 30 minutes. Now, when the NPA identification, NPA marking is completely perfect, but the point is that I'm just going to share with you one example. Okay, अब मेरा जो discussion होगा ना वो example oriented होगा. बैंक के अंदर just a real example I am going to share with you. बैंक के अंदर एक पर्टिकुलर फाइल चेक की, उसको सीसी बैंक ने दे रखा था. उस सीसी को हम लोग दे रहे हैं, इंटरेस्ट बराबर उसके अंदर क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट फिगर वाज डिपॉजिटेड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, 20 lakh CC. But the point is that no business transaction was found in that particular account. We have raised a concern in front of branch manager that sir इसमें तो कोई business related transaction ही नहीं है. तो वो बोलता है सर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पर रेगुलर इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट सर्व हो रहा है. तो हमने बोला सर जब सर इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, इन दैट केस यू शुड गो विथ पर्सनल लोन. व्हाई यू आर एंटरटेन हिम विद द सीसीए और बिजनेस लोन? तो बोले नहीं वो बिजनेस तो कर रहा है बट कुछ इश्यूज की वजह से अभी उसके बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहे हैं. हमने उसके जीएसटी के रिटर्न खंगाले, वो भी 0 थे. उस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया गया. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ सिस्टम तो एनपीए आइडेंटिफाई करेगा बेस्ड ऑन द नॉन सर्विस ऑफ द इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन द आउट ऑफ ऑर्डर, बेस्ड ऑन द नॉन सर्विस ऑफ द इंस्टॉलमेंट. उसका क्या, जहां पर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन ही नहीं है सीसी अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में, और अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है दैट अकाउंट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ सीसी, दैट शुड बी क्लासिफाइड एज अ पर्सनल लोन. So that is again an important point which we need to keep in our mind. ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखते हैं, so our audit will be conducted in a very efficient way. Otherwise what will happen, करके आ गए साहब, ऑडिट हो गई, ऑब्जर्वेशन में यस नो नॉट एप्लीकेबल डाल दिया, पीछे से कुछ अकाउंट में लिख दिया कि इनके रिव्यू नोट नहीं था, इनके रिव्यू प्रपोजल में डेट नहीं लगी हुई थी, बैंक मैनेजर के साइन नहीं थे. यस दीज पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रिपोर्टिंग फाइल के अंदर डाल करके सरका दी जाएगी, कोई देखेगा नहीं उसको. बट सपोज इफ यू आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ थिंग्स, इट विल क्रिएट अ इमेज. जो अभी कई दिनों से एक इमेज बन गई कि क्या है, ऑडिटर आएगा उसको खिला पिला देंगे, वो घूम लेगा और हमारी ऑडिट हो जाएगी.
That should not be the focus. Our focus should be on the quality reporting. How to verify the branch internal control? So that again a very important role. आप चेक करो ना कि जितने लॉकर ब्रांच के अंदर फिजिकली अवेलेबल है, उतने लॉकर जो ब्रांच ने सिस्टम में दे रखे हैं, क्या वो टैली हो रहे हैं क्या? That we have to check. We need to check. We need to check the stationery which is there in the inventory of the balance sheet, the same is there with the branch or not. That also we need to ensure. आप चेक करो ना, जितने के स्टाम्प बैंक ने सिस्टम में बता रखे हैं, क्या उतने के ब्रांच के पास फिजिकल स्टाम्प्स अवेलेबल है या फिर नहीं? यू विल फाउंड द इश्यूज. जो फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट बैंक ने सिस्टम में डाला हुआ है, क्या वो सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स बैंक के पास में है या फिर नहीं है? जो फिक्स्ड एसेट्स उसने क्लासिफाई कर रखी है लाइक एटीएम. सपोज दे हैव मेंशन्ड द 5 एटीएम, or when you visited the physical premises of the branch you found only 3 ATM, so your question should be that where is 2 ATM? तो बैंक हो सकता है बोलेगा वो 2 ATM ऑफ साइट है. ऑफ साइट एग्रीमेंट का है, ऑफ साइट का रेंट कौन पे कर रहा है, उसके मेंटेनेंस का क्या हो रहा है? These are the issues which we need to discuss. ये बहुत बड़े पॉइंट नहीं है, it will not take much more time, but you will ask these things, it will create an image. क्योंकि कई सारी चीजें हमको हमारी रेपुटेशन के लिए भी करनी है. वो मैनेजर वहां बैठ करके सोचेगा, बैंक स्टाफ वहां सोचेगा कि हाँ इस बार जो ऑडिटर आया है दैट पर्सन हैज आइडिया ऑफ द ओवरऑल बैंक ब्रांच ऑडिट. सो आई रिक्वेस्ट दोज हु विल वॉच दिस रिकॉर्डेड वीडियो ऑन द चैनल ऑफ टेक्स्ट ग्रुप, बिकॉज अभी हमारे पास में 7 से 8 दिन है. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंसर्न रिलेटेड टू बैंक ब्रांच ऑडिट, जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो इंटरनल कंट्रोल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कभी आप सुबह 9 बजे बैंक विजिट कर लें, सरप्राइज विजिट. अवर कैश वेरिफिकेशन शुड आल्सो बी सरप्राइज. 9 बजे विजिट कर ले, देख ले बैंक का लॉक कौन ओपन कर रहा है, कैश की कीज किसके पास है. कहीं ऐसा तो नहीं है जो गार्ड है उसके पास ही कैश की कीज है, उसके पास ही बैंक की कीज है. दैट इज आल्सो अ कंसर्न ऑन इंटरनल कंट्रोल. वी आर हियर फॉर 4 days only, but we should take care of these things. Then our report will be completely in a efficient way. Again, I have already cover that specific point that your sample selection plays a very important role, because if there will be any issue on the sample selection, then yes, it will. Now I think my audio is perfect. Okay, so last time we have done a particular audit, and in that particular branch what happened, bank has opened around 100 to 200 accounts under a scheme. Okay, so bank has opened certain accounts under a scheme. और जब वो अकाउंट उस स्कीम में इश्यू हुए थे और ओपन हुए थे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ. तो हम उस अकाउंट्स को जस्ट वेरीफाई कर रहे थे. हमको ऐसा लगा एक डे पे इंटरेस्ट वहां पर डिपॉजिट हुआ है, and the loan amount was just 1,50,000 rupees, 2 lakh rupees, 2,50,000 rupees, and on a single day interest has been deposited. So we have checked that when the interest has been deposited, we have checked the entries, the narration, and we found that the branch manager has deposited the interest amount in all the accounts. अगर वो नहीं करता तो account was classified as NPA. Interest amount was very small, 800 rupees, 1,200 rupees, 1,500 rupees.
this is also a critical issue that we need to take care. कई बार होगा वो सिस्टम उस अकाउंट को एमपी आइडेंटिफिकेशन करेगा ही नहीं, बट हमारी सैंपल सिलेक्शन टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि जो अकाउंट हम खोले देयर शुड बी अ इशू एंड दैट शुड बी अ रिपोर्टेबल इशू. हम तो चाहते हैं हमारी ब्रांच एकदम क्लीन हो, सब कुछ परफेक्ट हो, बट इफ देयर विल बी अ इशू देन द सेम शुड बी रिपोर्टेड. Okay, so sample selection plays a very important role. Just for an example, I have used the term that, sir, आप देख लें कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है किसी स्कीम के अंडर में हो, ऐसे में 0, 1, 2 के मूवमेंट्स पे बेसिस पे हो, एनपीए के मूवमेंट के बेसिस पे हो. Physical files verification strategy. Sir, the person who is going for the physical file verification in your team, try to give him a list or give her a list. These are the documents which is required. ये डॉक्यूमेंट्स है जो तुमको देखना है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में. होम लोन के केस में दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन, व्हीकल लोन के केस में, एजुकेशन लोन के केस में दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन व्हिच वी हैव टू चेक. ये लिस्ट आपको उनको देनी है. एंड इफ यू विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिस्ट टू देम, और हर अकाउंट नंबर वाइज वो अपने उस एक्सेल में, मास्टर एक्सेल के अंदर एंट्री करता चला जाएगा दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल. दिस विल गिव यू एश्योरेंस टू यू एज वेल दैट एवरीथिंग इज अ फाइन वे. And physical verification जब वो देख रहा है, so we need to give him a special instruction that when financial statement, whenever there will be ITR, you should check carefully the nature of income, whether the business is of textile industry and the earning is from the steel industry. How it is possible? There may be some issues. So we need to give the instruction to our brain that should be completely in the identification mode, like a forensic audit. When we are going for the forensic audit, if you have idea about that, we have 3 flags: green flag, red flag, yellow flag, and based on that flags we are preparing our strategies and find out the things. So that we need to be very much careful. Efficient use of LFAR. सर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, this long form audit report is itself an audit tool. अगर हम बिफोर गोइंग फॉर द बैंक ब्रांच ऑडिट उस लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स बना लें, ये हमें चेक करना है, विल गो फॉर द ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, definitely our audit will be very much efficient way because everything has been included in that long form audit report. So we need to be very much careful from that perspective that our LFAR study should be in a very analytical way. And each and everything which is there in the LFAR report, we should prepare a questionnaire. If you require, you can take from me a questionnaire based on LFAR. I will share with you. But the point is that for bank branch audit, I am very aggressive because as our fraternity, this is a very specific work for all of us. So when we are going for that particular work, we should be in a very efficient way. And I request each one of you, try to share this video with your article, with your staff. ऐसा नहीं है कि मैं टीम लीडर हूं तो मुझे ही सारी सारी बातें पता होनी चाहिए, मेरे स्टाफ को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, वो जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. दैट शुड नॉट बी द मैकेनिज्म. योर स्टाफ शुड हैव ऑल द आइडियाज so that you can go for the team work. Otherwise your work will not be categorized as a team work. Importance of working paper. Sir, you are going for the Excel based working paper, that is good. Also final remarks should be there in your diaries, and your working paper very useful because our institute and peer review board is also very much careful, and whenever there will be a peer review, whenever there will be a assessment of our quality, our working paper plays a very important role. So that should be there with us. Renewal reviewer plays a very important role. Again, I just wish to share example with you. कई बार क्या होता है, अकाउंट का रिव्यू होता है, and in that review bank is going to change the rate of interest in maximum cases. Suppose the earlier rate was 8.10. Now in the review the rate has been revised to 8.50. There is an increment of 0.40%. Now what will happen, you have checked the review letter is there because आपने अपने स्टाफ को यही तो गाइड किया था कि साहब डॉक्यूमेंट में देख लेना रिव्यू लेटर होना चाहिए, उसने बोला रिव्यू लेटर है, that is completely okay. So at that time you should also check review letter में अगर rate
है क्या उसने सिस्टम में वो रेट रिवाइज किए या फिर नहीं किए, एंड इन 70 to 80% cases you will found that the rate has not been revised, and due to that there may be MOC, interest variation, may be reduction, may be enhancement. कई बार क्या होता है, रिव्यू नोट आकर के पड़ा रह जाता है, फाइल में लग जाता है और वो इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं होती है, क्योंकि क्लाइंट को तो पता नहीं है क्या लगना चाहिए, क्लाइंट तो इतना अवेयर होता नहीं है। अब उनको एक लिस्ट बना के उनके रीजनल ऑफिस को भेजनी होती है, वो कई बार बैंक में ज्यादा काम होता है, वो रह जाती है। इट विल क्रिएट द इश्यूज ऑन अकाउंट ऑफ एमओसी, सो दैट इज अगेन अ पॉइंट फॉर अस। So review is very critical. Whenever there will be a renewal, we should check the financial statement. और जब भी renewal होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, they are going to make a note. They are going to make a note. There should be a capital infusion certificate. अगर उसकी sales इस point पे reach नहीं होती है इस quarter में, in that case there should be a reduction in the limit. और कई बार वो sales reach नहीं होती है, लेकिन फिर भी reduction नहीं होता है। और जब वो reduction नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने excess उसको लिमिट दे रखी है जो उसको नहीं दी जानी चाहिए। देयर शुड बी एनपी रिलेटेड क्लॉज, देयर शुड बी एमओसी दैट योर लिमिट शुड बी रिड्यूस्ड, बैकडेटेड, बिकॉज़ इंस्ट्रक्शन वाज देयर। और उस टाइम वो बोलेगा हम फॉलो नहीं करते, तो आप अपनी अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं फॉलो करते हो? सो दीज आर द थिंग्स वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। So renewal and review plays a very important role. Ask your bank team, ask your bank staff that sir provide a list of review and renewal in Excel. If you will take the Excel of advances, review, renewal, SMS 012, I will also share a list of documents which we need to demand, SMS 012 and LPA moments. और अगर आपने इनको डे 1 में from 10 to 1 PM, अगर आपने इसको एनालाइज करके सैंपल सेलेक्ट कर लिए from 2 PM to 5 PM, आपने फाइल्स चेक की और सिस्टम चेक किया, it's my assurance to you, on the day 1 you will found 5 to 7 significant issues in the that will lead to MOC, that will lead to suggestion of the changes. और उस डे 1 पे ब्रांच मैनेजर बैंक स्टाफ को भी पता चल जाएगा, यस ऑडिटर हैज द आइडिया। So this time we should be ready with our practical strategies. Why MOC is important for us? Sir, earlier the audit was for 100% of the advances, then 90, 80, 70% advances. Why? Because RBI found that 60 to 70% chartered accountants are providing the report without any changes. So when the chartered accountant are not suggesting any changes, that means our financial statements are perfect. That means is doing the perfect work. That means there is no requirement of audit, and the scope is reducing continuously. और यही स्थिति रही in that case, वो दिन दूर नहीं जब 50, 40, 30, 20 और there may be no bank audit because concurrent auditor will do the certification. So this time when we will go for the bank, our purpose is not to give any unnecessary MOC. Our purpose is not to go for unnecessary arguments. We'll do our work with 100% professionalism in public interest only, because our certification plays a very important role. Our certification will specify the share market price of that particular bank as well. छोटा सा impact है, but बहुत बड़ा impact create करता है. So हम unnecessary कोई MOC नहीं देंगे, but if there will be a requirement of MOC, हम छोड़ेंगे भी नहीं. That should be our target. Okay, and definitely if you work accordingly, if you will work in a practical way, if you will work in an efficient way, definitely you will find out something. Sir, हम लोगों को लगता है कई बार MOC should only for the changes in the financial statement on account of NPA, on account of interest. No, there may be MOC on the classification related issues. आप लोग होम लोन देखते हो, when you are asking for the Excel of advances, try to get the Excel with the classification, sector wise classification, priority sector, non priority sector. Home loan up to 35 lakh, priority sector above 35 lakh, non priority sector. Many times when you will check the Excel and you found that the loan amount above 35 lakh is also classified as priority sector, there will be MOC on account of classification, priority to non priority and non priority to priority sector. कई बार उनको क्या होता है, उस स्कीम के अंदर उनको प्रायोरिटी सेक्टर लोन सैंक्शन करने होते हैं, अब प्रायोरिटी सेक्शन आ नहीं रहा है, तो क्या करना है कि स्कीम को क्लासिफाई कर दो, इट इज अ प्रायोरिटी सेक्टर. So classification related issues also plays a very important role.
हो सकता है there may be chances that bank is going for argument that sir ये जो क्लासिफिकेशन वाला जो आप बोल रहे हो ना, ये क्लासिफिकेशन वाला कोई इफेक्ट नहीं करेगा. यस, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इंटरेस्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा, बट सर इट विल इफेक्ट एट द टाइम ऑफ क्लोजर. So we need to be very much careful from priority non-priority sector. Also, when you are demanding the advances, try to demand with scheme code and scheme name, under which sector the loan has been sanctioned. Sector name should also be there. जो एडवांस की रिपोर्ट आप ले रहे हो ना, मैक्सिमम डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम कॉलम के साथ होनी चाहिए. सो sector wise classification, when you will take, what will happen? Just I am going to take one example that sir a textile industry has taken the loan और बैंक को उस समय एग्रीकल्चर एडवांसेस ज्यादा दे रहे थे बिकॉज देयर वर स्कीम और उनके टारगेट्स थे. एग्रीकल्चर स्कीम आई नहीं. सो व्हाट दे हैव डन, क्यों ना इस पर्टिकुलर लोन को हम लोग एग्री में क्लासिफाई करें, सेक्टर एग्री. आगे मैं देख रहा हूं एबीसी टेक्सटाइल्स. हाउ द टेक्सटाइल कैन बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री? दैट मींस देयर इज अ चेंजेस and MOC is required for the classification related issues. So conclusively, the purpose of sharing the example is only one, to give you an idea that yes, these things plays a very important role for all of us, and based on these things we have to prepare the report in a very efficient way. कई बार हम केवल एडवांसेस में उलझे रह जाते हैं, कई बार केवल हम फिजिकल फाइल्स को देखने में रह जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि कई सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज हमारे पीछे छूट गए. Take a audit report, that is trading P&L and balance sheet from your client, that is P&L and balance sheet. Check each and every line item which is there in P&L and balance sheet and try to identify, try to judge that each and every line item is genuine, the expenditure which is mentioned in genuine. कहीं कोई लॉस बुक कर रखा है तो we have to identify that why the loss has been booked by the bank or related norms has been followed or not. So merely advances check नहीं करने, उनके P&L balance sheet को we are going for a certification of the P&L and balance sheet, so we have to check it very carefully. The P&L and balance sheet should be checked very carefully. Each and every line item which is there in P&L, the annexure we should check. That should be our responsibility. मैक्सिमम ईयर एंड पे अगर कुछ विंडो ड्रेसिंग करनी होगी, नाउ डेज अब उन लोगों को पता है कि ऑडिटर आएगा वो 23 से लगा करके 4 अप्रैल तक की रिपोर्ट मांगेगा, कुछ विंडो ड्रेसिंग हुए तो उन्होंने बंद कर दिया. They have started transferring the amounts or doing the things by 22nd or by 20th of March or by 15th of March, by 10th of March, by 5th of March. So we should be very much careful for the March month itself. कोई अगर ऐसे में 012 से रेगुलराइज हुआ है in the March month itself, so we have to be very much careful कि विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है. And if you found any doubt on that, in that case you just need to demand the voucher. Check the sign which is there in Finacle or the core banking system and the sign which is there on the voucher. That should also be our responsibility. I think you all are getting the points. MIS report survey is very useful. But the point is that from 2nd of April till 7th of April, the MIS survey will not be there for you. Annual closing होती है, वो बोलेंगे अभी नहीं चल रहा है, शाम को चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा. These type of things will be there. जैसे ही MIS सर्वर चले, we need to generate some reports. For example, insurance pending report, stock statement pending report. These type of reports can be generated from the inspection pending reports. And based on these reports, you can go for your sample selection as well. Initially, आपके पास जो डेटा है उसने आपने सेलेक्ट कर लिया. अब 7th को भी अगर आपकी MIS की रिपोर्ट्स आ रही, then also it is okay. हम लोग केवल वो रिपोर्ट जनरेट करके चेक कर लेंगे, कोई रिव्यू जो हमको दिखाएगा, कोई रिव्यू पेंडिंग तो नहीं है, कोई रिन्यूअल पेंडिंग तो नहीं है, कोई शॉर्ट रिव्यू तो नहीं किया गया, वो हम लोग वहां से वेरीफाई कर लेते हैं. और उस दिन अगर कुछ आता है तो विल गो फॉर अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1 डे. मोटा मोटी हमारा सारा काम हो गया बेस्ड ऑन द एडवांसेस लिस्ट. So MIS server also plays a very important role. Sir, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में आपके पास में जो भी आइटम्स पड़े हैं एज एसेट्स, you should be very much careful that should be there in the branch, like the stationery, like the particular stamp. These are very crucial documents. हमको लगता है 500 रुपए का स्टाम्प नहीं है तो क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो एग्रीमेंट किसी और के साथ कर दिया गया है. That is the crucial point that we have to take care.
जो डीडी के सीरियल नंबर उसके कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर स्पेसिफाई है, इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर की डीडी आपके पास होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स जो भी स्पेसिफाई है वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ब्रांच के साथ होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट कोई मिसप्लेस हो गया, कोई इसका मिसयूज ना कर ले। दैट शुड बी रिपोर्टेड इन आवर रिपोर्ट एज वेल। हो सकता है इनमें से कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरनल ऑडिटर की होती हो, कॉन्करेंट ऑडिटर अगर वहां रेगुलर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हो, बट अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो we should do that. It will enhance our capacity, our capabilities, and it will also enhance the reporting requirement of our फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर बुक्ड है उनकी रिलेवेंसी, उनके हेड्स, दैट वी नीड टू टेक केयर। वेरिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एरिया। Operational area is also very significant, very special for all of us, that we have already covered, that your operational area. Contingent liability, if there is a contingent liability in the balance sheet, then we have to check what is the reason of that contingent liability which has been here, whether the grade is perfect, whether the contingent liability के confirm तो नहीं होगी है, that we also need to ensure. अगर कोई इंश्योरेंस है उसको कोई अमाउंट आने वाला है तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट की गई है या फिर नहीं की गई है, दैट आल्सो वी नीड टू इंश्योर। तो सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू इंश्योर from the operational area as well. Cash verification should be surprise, your ATM verification should be surprise, rent agreement you should check। अगर वो ब्रांच कोई बिजनेस यूनिट हैंडल कर रही है तो उस बिजनेस यूनिट के एक्सपेंडिचर कौन हैंडल कर रहा है, दैट आल्सो वी नीड टू टेक केयर। So operational area also plays a very important role. So sir, the whole purpose of this specific session, this specific webinar on the Text Group platform is only one to give you an idea about the practical insights of the bank branch audit. I have not guided you about the LP identification. I have not guided you about the Banking Regulation Act provisions. But the point is that I have given you an idea that how we can identify the things, how we should go through in the particular bank branch audit, what will be our flow in this bank branch audit. And so now we have 5 to 7 to 8 days to start that bank branch audit. And during that bank branch audit, also, if you have any query, any concern, I am here for you. Okay, till 15th of April. But now the point is that if you wish, that's this topic we should discuss in a detailed way, like LFAR, like any other topic which we should discuss in a detailed way, you can put it in the comment box. So that in upcoming days, 5 to 7 days, we'll plan one recorded session or one live session on the given topic like LFAR, NP identification, sampling techniques. We may go for that. And whatever will be your review about our today's session, I request each one of you, just provide your feedback in your chat box, because your feedback plays a very important role for me, literally. So I wish that everyone is going to left your feedback about the session. Okay. And also I request, this video is not only for the team leaders, this particular webinar, this particular session is for all the person who is going for the bank branch audit. So you can share this particular webinar link with your article, with your staff, with your team member. And yes, if you have any query, I am here to solve for the bank branch audit. So all the best for the bank branch audit 2026, and go for the quality reporting this time. Whenever you will prepare the report, reconsolidate all the queries, internal control, operational part, advances verification, everything we have to check, and we have to go for a conclusive reporting. Thank you once again for joining the session. Thank you from Text Group as well. Thank you. We'll meet you soon in another webinar, workshop, live session as well. Thank you once again. Bye-bye.